And first, my storytelling also I learned from river because there are two fishermen who used to tell me stories in the evening, Oh, okay. Haluda and Magam. Right. So these two people were the guys, who probably made me what I am today, in terms of storytelling. Right. But also you talk about sharing space with your father and all of the brothers wanting, to sleep with the father because he would tell lovely stories as well. That tradition of storytelling, which again is very much in our blood, isn't it? Yeah, it is. I think storytelling, which is what the first chapter says, that everybody loves a good story. I think stories is what actually, in sitting in this room also, it's a story which makes our life brighter. I think that's the best thing happened, today, which is why, it's probably a good time when people are going to cinema halls watching stories. I think, it's like the way you need food, cloth, you need those stories to come to you. Is there something that you'd like to say about the next generation? You seem to be quite hopeful of what they will do compared to what we have done. What gives you that hope? Well, I think I'm very optimistic, and it's not the hope or anything. I can see the reality. Today's children, when my child was in the school, now he's doing undergrad in San Francisco. When I What's he speak to studying? them, he's studying music. Okay. So when I went to US also 2 months back, and I was talking to his friends as well, the kind of clarity they have about environment, gender equality, life, health, it's unbelievable. So I think which is what made me not optimistic but very hopeful that the world will be better. It is us only who become greedy. We wanted faster growth. So more than need, we went on doing, exploring everything, and the consequences are here. So these children, the new generation kids who are in their 20s are incredible in terms of understanding everything. You think personally and professionally we've all paid a price. You talk about having paid a price for sort of following your dream, chasing your dream. I think so. I think our generation is the most lalchi generation, I would say. Greedy, lalchi, whatever you call, because it is our parents who had actually struggled for the independent India, for from that poor country to what we have made today, or developing, fast growing developing nation. It was us. It is just the greed what made us, what we see today. Right. And I think the idea that there is still hope, all your films have in a way reflected that, whether it was I Am Kalam or even Kadvi Hawa, all of them have some kernel of hope. What apart from the young people of India do you still have hope from? Well, I think it's only if you see my films, especially the trilogy. The first one is Kaun Kitne Pani Mein, about how we created the world. Right. Man-made famine. Second was extreme weather conditions. If the third one you probably did not see, which is called Kalira Atita, which is almost like a silent I film, haven't seen that. Sorry. which is apocalyptic, that the Right. world will finish. So I wanted to give that shock. And that's how the whole idea seed happen of Jengaburu is from that no, there could be still hope that he can fight back. Right. So I think that hope on environment, on this planet, on the river, the forest, everything is the new hope which is raised in Jengaburu in a way, that I can fight for it. And I think you have a lot of hope, especially from women. Yeah, of course. What you see, this bill to everything, it is women, who can change the world. I remember when I started. Yeah. Today Hello. Yeah. misbehaving with us. So I was working with this organization called the Hunger Project, and I was traveling to Bangladesh and India and many states when the 73rd Amendment came and women become panchayat leaders. And that's when I saw the power that they can actually change the world. So do you have hope from the women's reservation bill? I have to ask you a political question. Absolutely. This was much needed, this is the best thing happened in the recent time. And if you see, Odisha had done it earlier also, because there are a lot of women leaders they had sent, which is
which is very important. And they can balance out the world anytime better, they even have in the environment issues, than anybody else. And that again is a very Odia thing, right? The goddess, the mother goddess. Yeah, it's almost like a, it's not, but it's almost like a matriarchal society, like, northeastern states. We always, in our homes, it is women who have the, not I would say power, but who actually rule the house. Yes, they rule it everywhere, but Yeah. they don't necessarily get the credit for it. Yeah, but in our homes, it was my mother, sister, they had more power than the men say. Their say was much, anytime, even in marriage, in our smaller villages, we had never seen anything against women. Right. So, Neela Madhav Panda, thank you very much for joining us, for giving us your stories, for continuing to tell difficult stories, and more power to you. Thank you. Thank you. Thank you so much, Mr. Panda. Not This easy is a to... book. I think he'll be available to sign it, and if you buy a copy. Sure. So thank you. Well, as I was saying, not easy to make your voice count, but when there is a will, there is always a way. Thank you so much, Mr. Panda. Could I now request CEO, Ms. Lakshmi Menon, to please come on stage and present a memento as a token of appreciation to Mr. Neela Madhav Panda from the New Indian Express family. Thank you. Thank you so much. Well, ladies and gentlemen, we are getting the stage set because we've already got the news that Honorable Union Minister Education, Skill Development and Entrepreneurship, Shri Dharmendra Pradhan, would be joining us in a few minutes from now. So I'll request all of you to stay settled as we get ready to hear his keynote address. Of course, the mandatory request, please keep mobile phones in silent mode. Like I've already said in the beginning, all the action is happening here on stage, so your phones can be on silent mode. But do not forget, when you're posting something on social media, Instagram, Twitter, X, LinkedIn, whatever, Facebook, please use hashtag OLF23. Let's make OLF 2023 viral on social media. Following the session with Shri Dharmendra Pradhan, we will be having 3 more sessions for the day. So I'll request all your gracious presence with us throughout the day and also tomorrow when we start at 10:30 a.m.
I seriously hope you all are making good use of your social media handles today, because I do see a lot of selfies and pictures being taken. Please don't let that go waste. Post them on your social media. And of course, use our hashtag OLF23. It's indeed a privilege for us that the Honorable Union Minister, Shri Dharmendra Pradhan, has agreed to grace the first day of OLF 2023 and would be delivering the keynote address in a short while from now. So this session, we are calling it Words, Ideas and Lessons, creating a new sense of identity. And like I've said, we'll have 3 more sessions after this as well. All right. Ladies and gentlemen, Honorable Union Minister, Education, Skill Development and Entrepreneurship, Shri Dharmendra Pradhan is here with us. On behalf of the New Indian Express family, we extend a very warm welcome to him and take this opportunity to invite him onto the stage along with the Editorial Director of the New Indian Express, Mr. Prabhu Chawla. Thank you, sir, for your gracious presence. We once again extend a very warm welcome to Honorable Union Minister Shri Dharmendra Pradhan. Thank you, sir. May I now request the resident editor of the New Indian Express, Bhubaneswar, Mr. Siba Mahanti, to present the introductory address. Thank you. Honorable Union Minister for Education and Skill Development, Sri Dharmendra Pradhan. Respected Sri Prabhu Chawla, Editor Director of the New Indian Express. Ms. Shantavana Bhattacharya, Group Editor of the New Indian Express. Respected Ms. Lakshmi Menon, CEO of the New Indian Express Group. All our esteemed speakers, panelists, guests and everyone in the audience, Namaskar. I extend a warm welcome to each and every one of you to the grand celebration of literature, that is the Odisha Literary Festival 2023. As we gather here today, it fills my heart with immense pride to see this galaxy of luminaries from the diverse walks of life gracing this occasion. 11 years ago, the Odisha Lit Fest embarked on its ambitious journey, seeking to ignite a discourse on the richness of Odisha's literary legacy and building a confluence of regional, Indian and global literature. The evolution of this platform into a vibrant hub, sparking a continuous flow of ideas, debates and discussions over the years, has been an incredibly humbling experience for us. What started as a seedling of an idea has now grown into a towering tree, reaching out to touch the hearts and minds of so many. Just to present the big picture, in the last 1 decade and more, the Odisha Literary Festival has hosted 132 sessions with 272 speakers and panelists drawn from the who's who of Indian literature, political and social leaders, thinkers, cultural practitioners, filmmakers from the world of art and music, etc. From Ruskin Bond to Salman Khurshid, Pratibha Ray to Anuja Chandramouli, Shashi Tharoor to Sitakanta Mahapatra, Amin Haq to Pushpesh Pant, Piyush Mishra to Vishal Bhardwaj and Rekha Bhardwaj, to name a few of the brilliant minds who have had a lasting impact on the audiences and transcended to the society as well. As you all know, the large audience turnout year after year, the enthusiasm of the young ones to take part in the festival stands testimony to the fact that OLF has truly etched its place as the most awaited event in the annual calendar of not only Bhubaneswar but
Eastern India. In today's fast-moving social landscape, the definition of literature itself is undergoing a profound transformation. The internet, social media, and the new age platforms have introduced a dynamic dimension and a fresh perspective on storytelling. Over the next day and a half, our carefully curated sessions at the Odisha Literary Festival aim to capture this transition, to provoke thoughts and stimulate minds in this esteemed audience. The theme for 2023 is the ideas of identity. Yes, identity, be it national, cultural, caste, class, gender, or ethnicity, has assumed center stage globally, nationally, and even in the minute social fabric. The literary trends, too, are not untouched, with increasing readers' interest in history, memoirs, biographies, and true account non-fiction. Thus, discussions around the ideas of identity will be aptly in tune with the prevailing times. The lineup of speakers, panelists at OLF 2023 is none parade. We have the august presence of Honorable Union Minister of Education and Skill Development, Sri Dharmendra Pradhan, who will discuss his ideas of new identity. I welcome him to the Odisha Literary Festival 2023 and extend my sincere gratitude for taking time of his busy schedule to be here with us almost every single time since we started this journey. As you all know, Sri Pradhan has been a torchbearer of everything the state of Odisha stands for. As a tall leader of the state and one of the most powerful ministers at the center, he has left no stone unturned to protect, promote, and propagate the Odia identity. His work stands testimony to his relentless pursuit that in the last 10 years, Odisha has received the largest allocation from the center is largely due to Sri Pradhan's efforts. Sir, I thank you very much again from the core of our hearts, and I welcome you to the ceremony again. It's a privilege to have you as our chief guest. A special mention of gratitude is owed to Sri Prabhu Chawla, our editorial director, a beacon of this initiative. As I call him, the grand young man of Indian journalism. He's the energy core, and it is his pursuit of excellence that has shaped the Odisha Literary Festival into what it is today. I must also acknowledge the dedicated team at the New Indian Express, led by our chairman, Sri Manoj Kumar Shanthalia, our group editor, Ms. Shantana Bhattacharya, and CEO Lakshmi Menon, whose tireless efforts have been instrumental in making this festival a reality. To all our patrons, sponsors, and the people of Bhubaneswar, I extend a heartfelt thank you. Your support and encouragement have been the cornerstone of this journey over the past decade and more. Without you, this edition of the festival would not have been possible. I do not intend to stand in the way of what is all of you are waiting to listen from Sri Mr. Pradhan. Once again, I extend a very warm welcome to Honorable Union Minister, and I eagerly anticipate sharing your enjoyment over the next 2 days. Thank you so much again. Thank you so much, Mr. Mohanty. May I now request Honorable Union Minister Shri Dharmendra Pradhan to light the ceremonial lamp along with Mr. Prabhu Chawla, Editorial Director, The New Indian Express, Ms. Shantana Bhattacharya, Editor, The New Indian Express, Ms. Lakshmi Menon, CEO, The New Indian Express, and Mr. Siba Mohanty, Resident Editor, The New Indian Express, Bhubaneswar. The auspicious way to do this. Let there be the light all around.
Thank you, everyone. Well, ladies and gentlemen, we are truly privileged to have the presence of Honorable Union Minister Shri Dharmendra Pradhan, who is currently playing one of the most pivotal roles in the Narendra Modi government. As the Union Education Minister, he has navigated the implementation of the NEP at a very crucial socio-economic passage of India, braving the odds of COVID pandemic. Also known as the Ujwala Man of India, his crucial intervention as PNG Minister in the previous stint lifted millions of women of the country out of the morasses of poverty, propelling their empowerment. As the son of the soil, Shri Pradhan's commitment to Odisha and its development will always remain etched in time. May I now request him to deliver the keynote address. Jai Jagannath, Namaskar, good evening. This of 11th edition of Literary Festival, Odisha Literary, organized by the prominent group, the New Indian Express, in our state. Especially it is my responsibility to welcome Mr. Manish Shankar Iyer, very senior and seasoned politician of our country. My responsibility is a little bit more because I inherit him in the Ministry of Petroleum. So we have a special relationship in many issues. Our thinking are alike. Many issues, our thinking are in a different way. I welcome my dear friend Anand Ranganathan and other dignitaries, those who have welcomed here as panelists and guests. I'm happy. I was looking 2 days itinerary of this literary festival. I am part of this literary festival since last few years. I had one grievance with my elder brother Prabhuji. Out of this event, what is the benefit of Odisha? How Odisha is getting something out of this great literary festival in our state. He promised me few years back, gradually he will increase the content towards Odisha, because I have a very clear-cut conviction in one area. Some of our local cultural traditions, civilizational stories are not only pan-Indian, it is really global. So if Indian Express like institution or organization will deliberate all these things in the backdrop of Odisha, then it will be win-win for both. My state will get exposure in the contextual, present context, and the true sense, the name Odisha Literary Festival will be justified by an organization like the New Indian Express. Today, from me, expectation is I should say something about ideas of identity. बंधुगण, गोटे सभ्यता हो किंबा गोटे मनीष हो, गोटे भौगोलिक अंचल हो किंबा गोटे वर्ग विशेष हो, आमे समस्ते निजर सचेतन मनरे गोटे परिचय नहीं कि बंची थाउ। आमे ओडिया लोक, आमे ओडिया भाषाभाषी, आमे बेंगली भाषाभाषी, आमे आमर संज्ञा या आमर ना या आमर आराध्य या
आमर श्रद्धा केन्द्र गुड़िक युड़िक मनीष कौना कौटी जगह निजर गोटे परिचय तैयारी करे परिचय स्थान काल पात्र नहीं कि भेरी भी करि थाए बदलू भी थाए किंतु आमे जितेबाला गोटे ओडिशा भलिया राज्य रे ये भलिया गोटे मौलिक विषय उपरे परिचयर कल्पना कौन आइडिया ऑफ आइडेंटिटी संपर्क में आम आलोचना करवा से स्वाभाविक मोर भलिया जने जार विश्वास अच्छी सबु एंटिटी को कौन ना कौन गोटे विषय को लेकिन स्वाभिमान सह चलवा है तार परिचय दरकार आम राज्य आम प्रदेश ओडिशा या जदि ऐतिहासिक दृष्टि देखा जाए बहुत माइथोलॉजी किंवा पौराणिक काल को न जाइकी भी जदि प्रमाण आधारित तथ्य आधारित इतिहास को कई जन विद्यार्थी भावे समीक्षा करे कम से कम आमे कलिंग युद्धर उपरांत आज पर्यंत 2023 सेप्टेम्बर 23 पर्यंत जदि आम हिसाब करवा यार बयस पाखापाखि 2500 वर्षर इतिहास आम पाखे जार प्रमाणर सूत्र अच्छे कहीं ना कहीं यार दायित्व रे कौ समय अच्छा गोटे शासन प्रणाली अच्छी गोटे जीवन शैली अच्छी गोटे भाषा अच्छी लिपि अच्छी सृजन साहित्यर करा जायछि आवेग अच्छी जो आवेग गोटे अंचल एटा हुए तो परिप्रकाश होई पारे किंतु तार कल्पना रे तार थिंकिंग रे तार दूरदृष्टि रे सदा बेले वैषयिक प्रतिफलन अच्छी हुए तो ये विचार को ये भाषा को गोटे अंचल लोक अभ्यास करुथाई पारंती प्रैक्टिस करुथाई पारंती किंतु या साहित्य को अनुमान करले यार सभ्यतार लिंक गुड़ी को लेकिन जदि आमे खोजिबा आरंभ करुचु यार प्रमाण पृथ्वीर अन्य सभ्यतार भी मिलुछि तार माने विगत 2500 वर्ष धरिकी ए अंचल रे अनेक उत्थान पतन भितरे अनेक उच्चता आउ झटका खाइबा परे उच्चता को पहुंचीबा परे झुंटी ही पड़ी झटका खाइबार परे भी गोटे सुसंस्कृत समाज तार कंटिन्यूटी को बजई रखी थाए आमे ओडिया भाषाभाषी लोक माने ओडिशार लोक माने तार ना केतेबेले को परिस्थिति रे विभिन्न रूप रे अछि किंतु गोटे सभ्यता कौनसी ना कौनसी समानता सह भी बंधाई थाए से समानता गुड़िक अधिका थिबा कारणरू आज भी आम सभ्यताटी गोटे ज्वलंत जजुल्यमान दीप सदृश अच्छे एतिकिरे गोटे सभ्यता सीमित हो जाए कि एतिकिरे गोटे सभ्यता अटकी जीवा दरकार कि गोटे सभ्यतार चिंता आउटकम कौन हुई चिंतन प्रक्रिया आउटकम कौन हो पारे मझिरे मझिरे किसी घटनावली को अनुमान करले संशय भी सृष्टि होता है जे सतरे कौन आमे गोटे सुसंस्कृत समाज थिले सतरे कौन आमर गोटे बहुत बड़ इतिहास थिला सतरे कौन आमे साहसी थिले बंधुगण किछि दिन पूर्वे किछि पुराना मंदिर संपर्क रे अनुसंधान करुवा रिसर्च करुवा बंधु माने मते गोटे चित्र देखैले कोणार्क मंदिर आजिर बयस हम आज को हिसाब कले 1000 वर्ष पूर्व हम कोणार्क मंदिर रे विभिन्न कारुकार्य अच्छे आम समस्ते से विषय अवगत अच्छा
तार सूक्ष्मता संपर्क आम समस्ते गौरवान्वित भी हूँ गोटे चित्र से मत जड़े रिसर्चर बंधु देखले गोटे जिराफर सेटा मो पाई भी नुआ कथा थिला भारतवर्षर पश्चिमांचल व्यावसायिक संपर्क शताब्दी शताब्दी पूर्वर आजिर आफ्रिकीय देश गुड़िक सांगे अच्छे आफ्रिकीय देश रे जिराफ मिले मुझे कथा को नहीं जिते मो सामना को आसला मो भितर को टिके गली मो मन रे विश्वास हवा आरंभ होइछि जे आमे केवल पूर्वांचल को जाई नथिले आमे केवल जावा सुमात्रा इंडोनेशिया पर्यंत जाई नथिले आमे पश्चिम रे आमे ईरान सांगरे आजिर ईरान सांगरे मणिशंकर जी ईरान के साथ आपकी और मेरे बहुत कॉमन संपर्क है और यहाँ जो हमारे कोणार्क में सूर्य मंदिर है उस सूर्य मंदिर की जो इतिहास है वो जो लोक कथा में है मैं इसको नहीं कह सकता हूँ कि वो इतिहास की हिस्सा है लेकिन जो वहाँ लोक कथा में है कोणार्क जब बना उसकी जो पहला पुजारी आए थे पहला पूजक आए थे वो ईरान की सूर्य मंदिर से आए थे एक सिविलाइजेशनल लिंक कोणार्कर ईरान पर्यंत थिला किंतु आकु जाइए कोणार्कर जिराफ चित्र कोणार्कर प्रतिफलित होता जिराफर छवि आमर समाजर माइग्रेशन मोबिलिटी रो गोटे बड़ संकेत दौच कई जने मते रिसर्चर बंधु एबे बुझौथले मुझे पचारे कलिंग युद्धर कारण कौन हो पारे कलिंग युद्धर कारण दीटा होता आजिकल विश्व ट्रेड निगोशिएशन को बहुत महत्व दौच आजिर नुहे सबु समय व्यवसाय वाणिज्यर निजस्व महत्व थिला भारत वर्षर अन्य प्रदेश अन्य साम्राज्य गुड़िक कलिंग सांगरे संपर्क यही रखी जे कलिंग देकी विश्वर अन्य अंचल को जीवापाई बाट एईटा ही थिला कलिंगर बंदर समूह गुड़िकरे कलिंगर बंदर समूह गुड़िकरे अन्य साम्राज्य गुड़िकर व्यवसायी जो समुद्र देकी जाउथले ट्रेड निगोशिएशन रे टारिफ ने झगड़ा हला मगध सांगरे कलिंगर ट्रेड टारिफ ने झगड़ा हला कलिंगर श्रेष्ठी माने व्यवसायी माने अधिका ट्रेड फीस चार्ज करले ये व्यवसायी कथा द्वितीय आजिर कलिंग अधा भारत को हाथी जोगौथला आज भी आमर खबर कागज रे बाहर जे आमर हाथी एठी मातिले सेठी मातिले हाथी मनीष को हैरान कले केतबेले मनीष हाथी को भी हैरान करुछ मु एबे 2-3 दिन तले आमर परिवेश विभाग मंत्री को कहली मु आपको 10टा चिठी लिखिथि जे आमर अमको जगार ओडिशा रे हाथी को मारिदेले लोक माने मुझे आउ 10टा चिठी आपको लिखी अमको जगार लोक को हाथी मारिदेला ये आजिर 21st सेंचुरी कॉन्फ्लिक्ट समाधान कौन हम आपको देखा किंतु हाथी पूर्व समय मिलिट्री वारफेयर गोटे बहुत बड़ वेपन थिला माध्यम थिला आज जेते कि का पाखरे एयरक्राफ्ट केते अच्छी फाइटर जेट केते अच्छी सबमेरीन केते अच्छी गोटे समय केते हाथी केते घोड़ा को सैनिक सेना पाखरे केते थिला तार दक्षता से प्रमाणित होतला आम अंचल कलिंग भारत वर्षर अधा अंचल को हाथी जोगौथला मगध सांगरे झगड़ा है हाथी आउ हाथी सप्लाई रो जो एग्रीमेंट होता तार बुझामणा नहीं झगड़ा है यहाँ रिसर्चर बंधु कहते मत पोर्ट रो ट्रेड टारिफ नहीं झगड़ा है ये सब कथा गुड़िकर कहबार बाहुल्य गोटे सभ्यतार एवं आउ जड़े जड़े बंधु मत देखे कहले जगतसिंहपुर अंचल गोटे हाबिटेशन मु एंथ्रोपोलोजी स्टूडेंट होता कारण ये सब जिन स्वाभाविक मो मन में आकर्षण आसे और रुचि भी रहे मु पचारली
जनक ओडिशार बसती गुड़ाकर आयुष केते आम 1000 वर्षर कटक कथा कहूँ यार आइडेंटिटी ये आइडिया ऑफ आइडेंटिटी कटकर तारकसी काम ओडिशार सोनपुर हो संबलपुर हो बरगढ़ हो ए अंचल इकत्र काम इकत एठू साउथ ईस्ट एशिया को जाइए ना साउथ ईस्ट एशिया एटिका गोटे विषय गवेषणार विषय हो पारे आम तो जोर से कह आमठू जा जदि आम मधुबनी पेंटिंग आमर रघुराजपुर पट्टचित्र को देखा सूक्ष्मता आपे आपे बारी हो जाए किए कौटी पहुंचे ये गुड़िक कहबार उद्देश्य ओडिशार से बसती अनुमान जगत सिंह पाखे गोटे गाँव बसती जो अंचल शारदा दास प्रथम भाषाभित्तिक महाकाव्यर अनुवाद करथिले पाखापाखि 2800 वर्ष पूर्व कम से कम पौराणिक काल को न गला परे भी ये भूखंडर आइडेंटिटी कम से कम 2500 वर्ष बोली निसंदेह कह जाई पारे जो सभ्यतार रूटेडनेस 2500 वर्ष से सभ्यता 21st सेंचुरी रे कौठी ठिया है मोर दृष्टि रे आइडिया ऑफ आइडेंटिटी रो निकष कौन हम दरकार निर्यास कौन हम दरकार आउटकम कौन हम दरकार गोटे समाज रे गोटे माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी जो माने ओडिया भाषाभाषी लोक ये उपस्थित अच्छा आम समस्त मिसिक किए शिक्षा रे अच्छी किए व्यवसाय रे अच्छी किए खेल रे अच्छी किए संस्कृति रे अच्छी किए सिनेमा रे अच्छी किए साहित्य रे अच्छी किए संगीत रे अच्छी जे जो काम रे थाउ आमको ये 2.5-3 वर्ष रो समाज रो आजिर अवस्था कौन आम ओडिया साहित्य कथा अच्छी जे आम केते दिन मो मामूर निश अच्छी बोली कहबा मोर कौन अच्छी मु कौन कली मोर दायित्व कौन मोर भविष्य कौन ये गुड़िक आइडिया ऑफ आइडेंटिटी रो गोटे गोटे आउटकम बोली मते लगे आज 21st सेंचुरी रे जेतेबेले विश्व गोटे नुआ परिवेश को जाउची नुआ परिस्थिति को जाउची विशेष करके कोरोना उपरांत विश्वर जो परिवर्तन होउची एटा इंक्रीमेंटल चेंज होनी सहज सुलभ चेंज होनी एटा गोटे एक्सपोनेंशियल रेट रे चेंज होउची यार गति बहुत बढ़ी टेक्नोलॉजी इनोवेशन साइंस एगुड़ी को बहुत सीमित कर से समय गोटे सुसंस्कृत समाज आज थे आत्म समीक्षा करिवार आवश्यकता अच्छी मु भावुची परवर्ती समय जो विषय गुड़िक आलोचना ये हम से सब विषय गुड़िक जो मैंने आम ओडिशा संबंधित बंधु मैंने आम जोटी अच्छा ये मु माय पॉइंट इज नॉट ओनली वी शुड डिस्कस अबाउट ओडिशा बट आई एम कॉन्फिडेंट आई एम वेरी लिटिल बिट arrogant on this issue. Whatever Odisha's thinker has thought in old days, old times, and whatever we will discuss today, in Odisha, we never limited our ideas up to a particular geography. That's what we call the most respectable deity of our society, Lord Jagannath, as Lord of entire universe, from its nomenclature. So I strongly believe whatever this old civilization will ponder over, will think and will get into more deeper sense, the outcome, the Amrit will be for the entire well-being of human being. एई पई बंधु आमर दायित्व अधिका बढ़ुची आ मोर आउ गोटे मत शताब्दीर प्रारंभिक 2-3 दशक से शताब्दीर एजेंडा सेट हुए विंश शताब्दीर प्रारंभिक 3 दशक को आप हिसाब करंतु चतुर्थ दशक पर्यंत हिसाब करंतु 1908 मसीह फकीर मोहन सेनापति ऑरटरे लिखिले
जे केते दिन आमे भारतीय माने लिवरपूल रो लुण खाइबा मैनचेस्टर रो लुगा पिंधिबा तार 8 वर्ष पर महात्मा गांधी भारत को आसिले 1920 सुधा माने फकीर मोहन जो साहित्य जो आइडियाज रो आइडेंटिटी ऑफ आइडिया रो मंचर मुझे जो आइडिया रो चिंता कले फकीर मोहन सेनापति तार लेखिबार एटा तो ओडिया लोकंग तरफ आम मिछ क्लेम करवा नहीं फकीर मोहन सेनापति जो कथा को 1908 रे लिखिले महात्मा गांधी ताकू स्वदेशी आंदोलन रूप देले 1920 आड़ को 12 वर्ष पर ये आइडिया ऑफ ओडिशा तेणु आम विचार आम चरित्र 2015 रे महात्मा गांधी भारत को आसिले असहयोग आंदोलन तापर है भारत छाड़ आंदोलन है नरम दल गरम दल उभय काम कल नेताजी अभ्युदय है किछि चिंता ना से कहले देश स्वाधीनता तो है ही जीव किंतु आमे चलो पाठ पढ़ेवा काम लगिबा कोठी तिलक कोठी मालवीय कोठी लालाजी समाज गठन अन्य दिग विषय चिंता करले विनोबा भावे जमी किमती बंटा हम ता विषय चिंता कले आज से भाया भावे आमे ओडिया लोक माने आमर हजार हजार वर्षर परंपरा को आधार करके ये जो विषय इंडियन एक्सप्रेस आज गोटे विमर्श करुच्ची से विमर्श को आमे समस्ते ओडिशा रे स्वागत करने दरकार आमे आमर वैषयिक दायित्व आमर राष्ट्रीय दायित्व आम निज अंचल को सर्वोपरि करने सदस्कृत करने उपरको आने विनम्र गुंडुची मूसार समस्ते प्रचेषा करने दरकार मु इंडियन एक्सप्रेस रो बंधु मानकु विशेष करके आदरणीय प्रभु चावला जी को और सांत्वना जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूची मते इठी आपण भलिया विद्वत सभा सामिल करथिबारु धन्यवाद। Thank you, sir, for your inspiring words. I'll now request Mr. Prabhu Chawla to take this session, Words, Ideas and Lessons, Creating a New Sense of Identity, take this session forward from here. Thank you. It's very difficult to ask any question to Education Minister these days. It's very difficult. Because sometimes they become HRD Minister, sometimes they become Education Minister. I don't know the difference between education and HRD. Perhaps I'm not wrong. It was Mr. Rajiv Gandhi who devised this HRD Minister. Am I right, Mani? Because he put all human resources together under one ministry. Pradhan ji, because I don't want to get into details. What do you think in a federal government or in a democracy like India, where state subject is also education and is on the concurrent list, what is the role of an education minister? To unite or divide? No, any responsible person will not talk about divide. I didn't mean divide in terms of religious. No, any aspect, be it religion, be it language, be it region, be it geography. No sensible person can advocacy about any division. So there is certain things are unanimous in our country. We have to create a united force, united spirit, and I think there is a moment today in our country. We may have our differences in political issues. We may have differences in our certain particular issues. But in moreover, the country is united for well-being of the human being. No, when you say unite in the sense, because normally people say language unites. But in India, we can't have one language. Obviously, three-language formula, which was devised by various years ago, has not been implemented. Because on the name of education, a lot of fight takes place. Basically, it started with Mr. Nurul Hussain. And I must tell you, out of 33 education ministers so far, only 4 have completed term. Not many, because education ministers in this country are changed every second year. I'm surprised because in Modi government, where stability is ensured, you have a continuity of 5 years long duration for finance, defense, commerce, other things.
But even in Modi government also, you are the fourth education minister. So it looks like when it comes to education department, there is no kind of a stability even at the central level, even at the state level. The state is, education, don't you think, is an important subject? When language can't unite India, education policy should be such which can unite. Because on NEP also, now you must have heard many states have opposed it. So what is the role, how to education minister can unite everybody on one table? Prabhuji is an intelligent person in our country. I'll not say he is a journalist only, he's a thinker, he's a diplomat, he's good in words. So he has put two questions in one umbrella. One is language, one is continuity as education minister, stability in education department. I'll handle that in the supplementary question later on. But let me try to answer the part one of the question. Language is a divider or a unifier? I certainly believe Devi Prasanna ji is here. He represents language of the country. It may be Odia language for his advocacy, but he represents the language, vertical language. He is a language authority of the country. National education policy is saying all language are national language. There is a continuity, there is a similarity, there is interconnectivity in all the languages of our country. The moment we will say, this is the only language you will be taught, then the division and tension is there. Realizing going through our experience of last few decades, the education policy 2020 very categorically saying the early education will be in the mother tongue, in the local language. Now we will be happy to know. Now we have given advice to CBSE, the central board, to create mechanism to facilitate students, those who will want to study in their mother language, mother tongue, from class 1 to at least class 8. In this preparatory years, if they will want to learn, study and read in their mother tongue, CBSE is going to facilitate that, the CBSE will give that opportunity to them. Unless until the young person, young boy or girl, will learn the basic things, the preparatory years, the language he first listen, the language he first utter. If she or he will write and read in a particular language, then the holistic understanding of the student will be there. Recently, we will happy to know our NCERT has developed two primer in two very old and primitive languages of tribal language of Odisha. In the neighboring of Andhra Pradesh and Chhattisgarh and Odisha, there are two tribes. One is Saura, they speak Kui language. One is Bhatra, they speak Desia language. For both of them, the two tribal language, they have their own lingua franca. Now, in Odisha part of that tribal community, through Odia alphabets, we have created premier for these two tribal languages. I have been to that area, I found there is a learning gap between tribal boy, tribal girl. Government is of this view, we have to create language decentralization approach. There are many languages in our country. Unless until in the era of technology, we have to create ecosystem, we have to create facility in their mother tongue and in their local language. That I personally feel, and those who are opposing in name of language, I think their opposition is political per se.
if someone is opposing in Tamil Nadu about national education policy is advocating for mother tongue. Entire political community of Tamil Nadu is of this opinion that teaching methodology should be in Tamil language. So what is the difference? I had been to all these states. My personal view, there are two things. One, what they are practicing, and another, what they are professing. For political purpose, they have their own opposition, but in the ground, there is unanimity. We have to create scientific temper for the students, and language cannot be the barrier. Language is always unifier in our country. I want to know, because there was a discussion about three-language formula. Do you think, are you in favor of that, reviving that formula, three-language formula? I'm talking about generally at the national level. How you communicate? But my understanding, there are two things. The existing three-language formula, language as a subject, in the CBSE, in the certain state boards, they are offering their mother tongue, one language. They are offering English, this is the number 2 language. They are offering the third language. The three-language formula derives from this practice. But I am talking about language as a method of teaching. This NEP is giving emphasis the method of teaching. You learn 3 languages, you learn 2 languages, you learn mathematics, you learn physics, you learn social science. In which language you want to learn? This NEP is giving emphasis the entire for the first time, NEP is recommending early childhood education from the age 3. From that age to age 18. Age 18 means up to class 12. In this 15 years, the maximum understanding will come from class Bal Batika 1, 2, 3 and class 1 to 8. In this period, in this cohort, if the boy or girl will learn according to her or his choice. If you want to learn it in English, welcome. If you want to learn it in the mother tongue, it should be. If they want to learn it in any other Indian language, it should be. The offer should be in front of the student. It is up to the student, they can choose the language. We should not get confused. Three-language formula is a 3-language as subject. This is according to her choice also. Somewhere it is Sanskrit, somewhere it is Marathi, somewhere it is Tamil also. But Prabhuji, the primary point is the method of learning. No, you are talking about method of learning. I am talking about method of uniting the nation. Because you are talking about what happens at school level. Yes, that's right, the way you are talking. I am saying, how does India communicate with each other? There was 3-language formula. Okay, Tamil Nadu will still write Tamil, you write in English, somebody will write Hindi. So I am talking about not what happens in the school. That is a good policy which you adopted. But does India need some kind of a common communicative mechanism? Or not? I am talking about that. I personally don't think there should be a single language. That's for NEP has very categorically said, all Indian languages are national language. Be it Tamil, be it Bengali, be it Odia, be it Marathi, be it Hindi, all are national language. You cannot impose a language on anybody. This is the language. The last few decades, the approach, this is the language. This is not good. In the era of technology, recently, I can cite one example. How easy is the things up? In the recently completed G20, we have developed an app. You might have used that app also in the media center. In that app, we have loaded more than 15 foreign languages. There is a language translator within that app. If I ask, if you say something in Hindi, the Italian gentleman in the other side can understand my Hindi through Italian language. Technology is so easy. If a French person will tell something in the French, and I can understand that in English or Hindi. Technology is a great equalizer and enabler of understanding each other. In this era of technology, we should not fix particular language A should be
the national language, the link language between all of things. There are a lot of 90% similarity between all the languages of India. So all languages are national language, and language is always a unifier, and lot of new things are coming up due to mobility, due to job opportunity. You have a good point. It means App India or App Bharat will unite India through technology. They will translate immediately. That is what we will do now. Not only technology, Amitabh Bachchan also do that. Because you will speak in Due to Odia. film, and due to song. You will speak in Odia, I have an app, I will translate it in No app. I can, if you are a Punjabi person, I am a Odia person. If you speak in Punjabi in a very musical rhythm, I can understand the Punjabi also. That is the beauty of Indian language. So I am not confused. You go to Puri Mandir, especially in Puri Mandir, in any religious place of India, people doesn't know the other language, the Hindi language or Punjabi language or Gujarati language, but they can communicate with each other. Language doesn't mean only phonetics. Language means it's an exchange between ideas, exchange between hearts. And today, in a democratic society, we should not impose a particular language on anybody. This is the link language. Good. You should not impose any language on anybody. That's a good idea. But why there is the allegation all the time? You want to impose history on others. You impose the ideology on others. That is also part of the education system. It started first with Nurul Hasan when he became the Minister of State for Education. He also imposed his kind of history on us. And when allegation against you party is, they are rewriting the history which the Congress party must have written upon their own angle. If that is the job of education, to rewrite what the other person has written. You are imposing history, that's allegation against you by the opposition. That's not. I hope that is not your personal view, Prabhuji. I said opposition. My personal view I can't express. That's I'm saying. I'm not so good like you in the words. So I'm a journalist here. No, I concede that. I concede that. First of all, we are not changing any history. Or rewriting. Or any rewrite. No rewriting of history, no changing of history. But we want to bring some facts in front of the society. Prabhuji, do you know who is Baji Raut? Do you know? Do anybody know who is Rani Gaidulu? Do anybody know who is Eluru Sitarama Raju? Baji Raut is a 12-year boy, 100 kilometers away from this place. He fought with British soldiers. He died with British soldiers' bullet. The boy's only fault was he did not heed to their word. He did not help them. The tyrant British soldiers shoot that boy. We Odia society thinks he is the youngest freedom fighter of the Indian freedom struggle. Why all India level the Baji Raut should not be taught? Why Sitarama Raju of neighboring Andhra, the tribal legendary hero, should not be taught in the pan-Indian level? Why Rani Gaidulu's heroic stories should not be taught in the pan-Indian level? We just want to draw a bigger line. We don't want to, we are not in job of making anybody small. We are drawing a bigger line. We want to brought out the right things in front of society. This society, the new generation should know this civilization has centuries-old struggle, centuries-old history, century-old legacy. Do you know, Prabhuji, there is a great astronomer, Pathani Samant of this place. He is as good as Aryabhatta. Who knows about in the pan all India level, who knows about Pathani Samant? Should not we brought Pathani Samant name to the national level? This national education policy is only recommending right things should come. One sentence. What do you call this, what you are doing? You are not rewriting history, okay. What are you doing by all this? In one line, I am going to say that. In your journalistic term, we are drawing a bigger line.
So you are Indianizing Indian history. भारतीयकरण कर रहे हैं उसका क्या? इसमें कोई गलत है क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, इसमें गलत क्या है? मैं पूछ आप रहा हूँ। ऐसे प्रभु जी आपको कहने में क्या कि भारतीय कोई हिचक नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि मैं अगर मैं भी आपकी विषय पे कहा कि मेरे 2500 साल की आइडेंटिटी है क्या इस देश में। मैं अभी तो आपके मंच पे पिछले बार भी कहा था, फिर उसको दोहरा, अगर मौका दे तो फिर दोबारा दोहराता हूं। हम उड़िया लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, हमको अशोक से पराजय मिला था। हम उड़िया लोगों की, मैं एक प्राउड उड़िया हूं, मेरे मन में दृढ़ता है। जब सम्राट अशोका उड़ीसा में आक्रमण किए ये ट्रेड टैरिफ और एलिफेंट के लिए, तब मेरे वहां डेमोक्रेसी था। मेरे वहां 2500 साल पहले अगर एक गणराज्य यानी कलेक्टिव विजडम काम कर रहा था, क्या मैं मैग्ना कार्टा के साथ कॉम्पीट ना करूं? कि मेरे डेमोक्रेसी 2500 साल पुराना है। मेरे साहस 12 साल की बच्चे के अंदर इतना था कि अंग्रेजों की गोली को खातिर नहीं किया। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग यही भारतीयता ही है तो मैं बड़े खुशी से कहूंगा इसी को ही दिखाना हम चाहते हैं। आप जिसमें अभिमान हो, जिसमें आइडेंटिटी बने, जिसमें लोग प्रेरित हो, उसको तो लाना ही चाहिए। तो आपका मतलब कि विदेशीकरण से आप देशीकरण कर रहे हैं, भारतीयकरण कर रहे हैं। देखो, भारत कभी ये चक्कर में नहीं पड़ा है। हम वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना में विश्वास रखने वाले हैं। भारत की सामान्य लोगों की वसुधा यानी ग्लोबल व्यू डीएनए में ही है। मेरे वहां एक जगन्नाथ मंदिर की लोक संस्कृति में एक दलित व्यक्ति की चरित्र है, दासिया बाउरी। वो भगवान को बड़े समर्पित होके भजन गाता है उनके लिए। वो भी ग्लोबलाइजेशन सोचा था। सेंचुरीज ओल्ड वो जब भजन गाया था ना, वो छोटा नहीं गाया था। वो कभी अमेरिका नहीं गया था उन दिनों में। ये नीलम माधव पंडित दुनिया में हमारा घूमता है, नाम करता है उड़ीसा का, वो तब नहीं गया था। भक्त साल बगा कोई नहीं आया था, मक्का मदीना से ही का था। आज की परिभाषा में वो माइनॉरिटी था, लेकिन महाप्रभु के लिए वो गाना गाया, तो वही ग्लोबलाइजेशन मेरे थ्योरी में था। इसलिए ये सारे में ये जो विदेशीकरण स्वदेशीकरण, ये तो रिसेंट पास्ट की एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। भारत ना उसमें कभी विश्वास किया था, ना आज भी कर रहा है, ना आगे ऐसे होने वाला है। ये भारतीयता है। तो भारतीय जब आप कर रहे हैं सब कुछ, पर कोई एक चीज पॉलिसी, नाउ आई एम शिफ्टिंग टू अदर प्लेस। ये जो फॉरेन यूनिवर्सिटी को आप इंडिया इनवाइट कर रहे हैं, इन्वेस्ट करिए, हमारे यहाँ लगाइए, उनकी कल्चर को, उनके सिलेबस को, उनके पढ़ाने के तरीके को, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये आपको लगता है कि इंडिया में जितना देश बढ़ा रहा है, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी को यहाँ बुला करके आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को समझते हैं कि इन्फीरियर हैं, क्वालिटी की इंफॉर्मेशन एजुकेशन नहीं दे सकते वो लोग क्या? देखिए प्रभु जी, देखो चीज़ों को ऐसे छोटे पर्सपेक्टिव में आप जैसे बड़े आदमी कैसे दिख सकते हैं? मैं छोटा है। आप नहीं दिख सकते हैं। मैं आपको दो चीज, हम मैं ये तो समझता हूँ हम इंडिया बहुत बड़ा है, बाकी जगहों से मेरा ये है कि भारत सबसे ज्ञान श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, उसके अंदर बाहर वाले आते हैं। हमें हमारे मन में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कभी नहीं है। हमने बाहर ले जाने के पहले अगर आप ही विश्वगुरु हैं। देखो, कहने से नहीं होता है, करने से होता है। और आइडिया किसी की आपको, आप तो उल्टा मेरे ऊपर आरोप लगाए, मैं तो उस प्रश्न का गुनहगार हूं कि आप तो छोटे आइडिया वाले लोग हों। मैं आपको दो उदाहरण बताता हूं। हम फॉरेन यूनिवर्सिटी रेगुलेशन यूजीसी अभी ऑन प्रोसेस है, जल्दी ले आएगा। हम विश्व की अच्छे विश्वविद्यालय को भारत ले आना चाहते हैं, हमारी शर्त पे। क्यों, उसकी मैं उत्तर दूंगा। आपने अच्छा प्रश्न पूछा। उसके पहले हमने भारत की 2 विश्वविद्यालय स्तर की इंस्टीट्यूशन को विदेश ले गए। आईआईटी चेन्नई अफ्रीका गया है, अफ्रीका की सरकार के खर्चे से तांजानिया गया है, अब तांजानिया की खर्चे से। यूएई अबू धाबी आईआईटी दिल्ली गया है। वहां से कोई आने के पहले हमारे लोग वहां गए पहले। मैं एक बताता हूं, जापान, कभी कभी मैं एक सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के नाते मेरे मन में एक जिज्ञासा कई दिनों से मेरे जब हेतु हुई तब से चल रहा है। जापान को स्टडी करनी चाहिए। जापान इतने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रगति क्यों किया? जिस जापान को के ऊपर एटॉमिक बम डाल के विश्व के कुछ ताकतवर देशों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म किया, वो जापान अभी
इतने शांत हुआ है, स्वभाव में शायद नम्र हुआ होगा, लेकिन बुद्धि में उतना ही तीक्ष्ण है कि विज्ञान और डेवलपमेंट में क्वालिटी की दूसरी नाम मेड इन जापान हो गया है। क्या उस प्रकार के प्रोसेस को भारत की इकोसिस्टम पे ले ही लाना चाहिए? क्या विश्व की साइंटिफिक डेवलपमेंट को भारत के विद्यार्थियों को वंचित करना चाहिए? आज भी भारत के लगभग 10 लाख विद्यार्थी बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। भारत में 4 करोड़ हायर एजुकेशन वर्टिकल में स्टूडेंट है। क्या उनको भी वैश्विक स्तर पे जो साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस में डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी नॉलेज शेयरिंग करने के अवसर हमें नहीं देना चाहिए? और भारत कभी ना किसी से प्रभावित होने वाला है, ना किसी को आक्रमण करने वाला है। ज्ञान की दृष्टि से हमें परहेज नहीं रखनी चाहिए। हमारे वहां तो विश्व के कई लोग आए थे ना पढ़ने के लिए, हम भी तो गए थे बाहर कहीं पढ़ने के लिए। ऐसे चीजों में मैं नहीं मानता हूं हम बाहरी विश्वविद्यालय को ले आने में हमारी कोई मूलभूत तत्व खराब हो जाएगा, मैं ऐसे नहीं मानता हूं। अब लास्ट टाइम बहुत कम है, थोड़ा सा क्वेश्चन है। एक ये भी है, आपके ऊपर चार्ज लगाते हैं कि आप इंस्टीट्यूशन जितनी भी है एकेडमिक, उनका सेफरेनाइजेशन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को बता रहे हैं, लिबरल लोगों को निकालते चले जा रहे हैं। उसमें कितना सच है? सच नहीं है। तो जितने भी अपॉइंट किए लोग आपने मेरिट पे अपॉइंट किए हैं? पूरा मेरिट पे किए। उनका बैकग्राउंड आरएसएस या बीजेपी का कुछ नहीं है, ऐसा कुछ? नहीं, आरएसएस बीजेपी होना कोई संविधान में गुनाह है क्या? हमने मेरिट को ध्यान दिया है। ये बैठे हैं प्रोफेसर सच्चिदानंद महांती, ये हमारे वाइस चांसलर रहे उड़ीसा की एक यूनिवर्सिटी में। ये तो आरएसएस की हाफ पैंट तो नहीं पहने होंगे कभी। मैं जितना जानता हूं उनके बारे में, तो अरविंद के अनुयायी है, तो अरविंद स्कूल में पढ़े हुए व्यक्ति थे, उनको हमने नियुक्त किया। आपका कहना ऐसे आपकी मैं तो 25 एग्जाम्पल बता सकता हूं। मैं तो मेरे सामने संजोग से महांती साहब यहां बैठे तो मैं इनको उदाहरण दिया। मैं तो बहुत दिनों के बाद उनको मिला। ऐसे नहीं है। देखो, अच्छे लोग आते हैं सर, हम मेरिट पे लाते हैं, हम मेरिट पे लोगों को विश्वास करते हैं। बाकी देखो, ये सारा विषय पे जहां तक आप मेरे को ले जाना चाहते हो, मैं वहां जाने वाला हूं। और मणिशंकर जी के सामने मैं कैसे जाऊंगा? वो भी नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं तो आपसे आप ये मैं आपसे फिर यहाँ आनंद रंगनाथन है, मैं तो बैलेंस में चल रहा हूँ कि अजय कुछ आज तो कुछ लोग मैं पूछ लेता हूँ कि मैं थोड़ा उम्र में भी बड़ा हूँ, आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। बड़े भाई हो आप मेरे, बड़े थोड़ी लिबर्टी, क्योंकि उनके आप ये कहना चाहते हैं कि आरएसएस या बीजेपी के होना कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है अच्छी पोस्ट के लिए, अगर मेरिट पे आते हैं। मैं आरएसएस का हूँ। नहीं, आप तो पॉलिटिकल पोस्ट पे हैं। क्या असुविधा है पॉलिटिकल पोस्ट? एकेडमिक पोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी महांती साहब है। हाँ, तो आपका कहना है कि आरएसएस बीजेपी भाई इसमें सारे इसमें परहेज क्यों है? मणिशंकर जी की एक विचारधारा, मेरे को आज डेमोक्रेसी में हैव टू रिस्पेक्ट दैट, उसमें गलत क्या है? इसमें कहने में कि आप बीजेपी, जैसे प्रमोद महाजन से मैंने सवाल पूछा था कि आप उनसे मैंने सवाल पूछा कि आप टेलीकॉम में सबको आरएसएस बीबीपी के लोगों को रख रहे हैं, कि उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेसियों को रखूंगा क्या? तो मैं आपसे पूछा हूं कि आप उस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, देखो मेरे ऊंचाई नहीं है मैं स्वर्गीय सर प्रमोद महाजन जी की तरीके से उत्तर दूं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत है, देखो विचारधारा सबकी अलग अलग होगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको आज के एकेडमिक्स में 25 लोगों को गिना सकता हूं शायद, जो आप स्केल लेके घूम रहे हो कि आरएसएस बीजेपी, शायद उस स्केल में वो फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन दे आर गुड पीपल, उनको रहना ही चाहिए। देश के हित में जो है वो सही व्यक्ति है, वो कांग्रेस का हो, वो उनको नेहरू जी को मानते हैं तो स्वागत है, हमें क्या आपत्ति है? ये डेमोक्रेसी है। हमें देश की विकास के लिए जिन लोगों की सहमति है उनको हमें महत्व देना चाहिए। एक दोबारा बताऊं, वो तो एक सिद्धांत बाबू बैठे हैं, ये हमारे चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर देश की रहे, अभी रिटायर करके आ गए ना सिद्धांत बाबू भुवनेश्वर। ये तो कभी बीजेपी के मेंबर नहीं रहे होंगे, ना इनकी धर्मपत्नी बैठी, वो तो कभी बीजेपी में नहीं थी। देखो, हम मेरिटोक्रेसी में हमारी सरकार चलती है। हम ये जो कुछ मित्रों को जिनको डेमोक्रेसी में डिफीट होता है ना, उनको कुछ बहाना ढूंढता है हमको गाली देने के लिए, ये क्यों इसको ले आया, उसको क्यों ले आया, उसको क्यों ले आया, ऐसा नहीं है। प्रतिभा और गुण के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देश के साथ जो सहमत है, देश के विकास के लिए जो कमिटेड है, उनको हम महत्व देते हैं और प्रक्रिया में सब लोग आगे आते हैं।
ये एक वो शायद ये पुराने नैरेटिव हो गया है प्रभु जी, और कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा हमको थोड़ा टाइट करने के लिए। ये तो नैरेटिव जो होता है एजुकेशन मिनिस्ट्री चलेगा आपको। एक अभी सवाल मैंने कल परसों पढ़ रहा था कि आईआईएम को पहले ऑटोनॉमी थी अपना चेयरमैन प्रेसिडेंट चुनने का, उसमें कुछ आप लोगों ने कुछ लगाया, इसमें क्या है कि अब सरकार से पूछना पड़ेगा दोबारा से? ना ना ऐसा नहीं है। देखिए 2018 तक आईआईएम एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उनको अधिकार नहीं था वो एक डिग्री दे पाएंगे। वो सर्टिफिकेट कोर्स चलाते थे, डिप्लोमा के कोर्स चलाते थे, डिग्री नहीं दे पाते थे। उसको ध्यान में रखते हुए हमने आईआईएम एक्ट 2018 लेके आए। उस समय में जो एक्ट हम लेके आए और आज थोड़ा उसमें हमने अमेंडमेंट किया है, 3-4 साल का अनुभव आया कि इनकी डायरेक्टर और उनकी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को चयन करने की प्रक्रिया हम देश में एक स्टैंडर्ड्स करनी चाहिए, जैसे आईआईटी का है, जैसे एनआईटी का है। आईआईटी भी उतने ही बड़े अच्छे ब्रांड है, जैसे हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी जिस प्रक्रिया से अपने डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ चेयरमैन को चयन करते हैं, ऐसे ही प्रक्रिया में हम आईआईएम को भी लेके आए कि यूनिफॉर्मिटी लाए। इसलिए कोई सरकार, देखो अभी 5G टेक्नोलॉजी देश में इंडिजिनस बन गई। किसने बनाया? 5 आईआईटी और सीडॉट, टेलीकॉम डिपार्टमेंट की मेटी के एक इंस्टीट्यूशन सीडॉट, उन्होंने बनाया। ये तो सब क्वालिटी के लोग थे। इसलिए हम एक स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए, गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी के लिए हमने थोड़ा आईआईएम एक्ट को थोड़ा अमेंड किया है, लेकिन इनकी एकेडमिक ऑटोनॉमी, एकेडमिक फ्रीडम जैसे था उसे ज्यादा रहेगा। चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। 2024 का चुनाव आ रहा है, आप चुनाव लेके अकेला लड़ेंगे ना बीजेपी, या कोई छोटी मोटी कोई पार्टी यहाँ भी ढूंढेंगे आप? देखो हमारा एनडीए है, हमारा एनडीए को भी इस बीच में 25 साल पूरा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए 2024 की चुनाव लड़ेगा। 350, मैं आज कह के जाता हूं, 350 से ज्यादा सीट एनडीए को आएगा। मैं असेंबली की बात करती हूँ। असेंबली का चुनाव भी साथ में होने वाला है, उसमें आप वहां तो एनडीए, यहाँ तो बीजेपी है, या दो ही पार्टी। उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा के बारे में कल तक इंतजार करिए। क्या बोला? कल पूछ लीजिए पहले। मैं उसमें बीजेपी, अरे मैं पिछले हमारे ये तो मैं आप प्रभु जी में इस बार फंसूंगा नहीं। आप इतने आप कल तक कल कंक्लूडिंग सेशन तक पूछ ही लीजिए। गलत जगह पे पूछ रहे हो। तो दिलीप भाई बैठे हैं, साक्षी हमारे, गलत जगह पे पूछ रहे हो। कल इलेक्शन में कोई बीजेपी का चीफ मिनिस्टर का, कल पूछ लीजिएगा। नहीं आपसे नहीं पूछू। कौन सा वाला? कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर का फेस कोई होगा यहाँ कि नहीं आप जैसा? नहीं, हमारा तो देखो, भारतीय जनता पार्टी इन दिनों में, हम अपना फॉर्मूला क्यों आपको अभी बताएं? हमने महाराष्ट्र में जीता बिना चीफ मिनिस्टर के नाम पे, हमने हरियाणा में जीता, यहां भी जीतेंगे। हाँ बिल्कुल जीतेंगे। Thank you so much, Shri Pradhan. In fact, that was a very, very interesting discussion that we had here. Could I now request Mr. Prabhu Chawla, Editorial Director, The New Indian Express, to present a memento to the Honorable Union Minister as a token of appreciation from the New Indian Express family. We would once again like to thank the Honorable Union Minister for giving us time for this Odisha Literary Festival 2023 and also delivering the keynote address. Thank you so much, sir. I'll request everyone to please stay seated because we'll be quickly moving to our next session. So I'll request the audience to please stay seated.
This is a very interesting session, Odisha in India, nationalism in Odia literature. So I'll once again request all our guests that I can see at the backside of this hall, I'll please request you to come and take your seats. All right, ladies and gentlemen, we are already running a little behind schedule, so we'll have to start the session because we have 2 more sessions after this. So, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ହଲ୍ର ଏଠି ଏଣ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସିଟ୍ରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ସେସନଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ. So, as I was saying, the next session, ladies and gentlemen, is Odisha and India, nationalism in Odia literature. Please welcome our eminent panelists on stage for this session with a round of applause from all of you. Author Ms. Nivedita Mohanty, writer Mr. Gaurahari Das, writer Mr. Abhiram Biswal, along with our moderator for this session, journalist Mr. Sampath Patnaik. Please give a big round of applause as I invite all of them on stage. And as they take their time to come on stage, get settled, and all of you are also settling down, I would like to give a little introduction about each one of them. Dr. Nivedita Mohanty is a well-known scholar of modern India history. Dr. Mohanty's book titled Odia Nationalism, Quest for a United Odisha, has earned wide acclaim as an authentic book on the subject. Her other book, The Eloquent Silence, published in 2006, provides an insight into the socio-political history and the art traditions of Odisha in the first half of the 20th century. As an independent researcher, she is recognized today as an authority on regional studies and a front-ranking scholar on the subject of Odia identity. We have with us Dr. Gaurahari Das, Indian author writing in Odia, who has the distinction of having received 2 prestigious awards from Sahitya Akademi, the highest institution of literature under the Ministry of Culture, one in the literature and another in translation. He has published more than 75 books, collections of essays, novel, short stories, fiction for children, plays, travelogue, and vignettes. Many of his major works have been translated into Hindi, English, Tamil, Punjabi and other Indian languages. His fiction has also been made into television serials and stage plays in various languages. He has been actively associated with the Sambad Group for more than 38 years in various capacities. We have with us on stage Mr. Abhiram Biswal, an essayist, columnist, reviewer, culture critic, public intellectual, bilingual speaker, writer, educationist and social science scholar. The main areas in which he engages himself as a writer and speaker include language and literature, Odisha, nationalism, mass movement, art, music, cinema, feminism, identity, politics, Gandhi, Marx, multiculturalism, human rights and many others. He has contributed to leading Odia dailies and currently writes a regular column, O Alochana, meaning dialogue and discussion for Sambad. Our moderator, ladies and gentlemen, Mr. Sampath Patnaik, is a Homi Bhabha Fellow for 2023-25 and a freelance journalist who has previously worked with the Indian Express, Reuters News in Delhi and Bengaluru. He was awarded the Legislative Assistant for Members of Parliament Fellowship by PRS Delhi to also work as a legislative aide for a Member of Parliament. He currently contributes pieces for The Wire, Open Magazine, Down to Earth Magazine. He has previously written for Scroll, The Diplomat and Khalij Times. I'll request Mr. Patnaik to take this session forward from here. And could I please request our guests who are there with us outside to please also get in and settle down for this session. Thank you so much. Over to you, Mr. Patnaik. I just use that for fiction. Just the mics. I'm not very good with these things.